So my dear friends, today we will discuss about the addition of vectors. Okay, so let us see addition of vectors. My dear friends, the addition of vectors, there is two methods. One is geometrically addition and other one is analytical or mathematical addition. So one is geometrical addition and other one is algebraic or mathematical expression addition. सो बच्चों, आप एक बात मेरे को बताओ, आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव लेवल का है ना? सो आपको बेसिकली फोकस किस बात पे करना चाहिए? फोकस किस बात पे करना चाहिए? algebraic method पे. So please focus on the most of the important topic is algebraic addition. Before starting addition, first of all, see the one important thing is that if suppose this is a vector A, please remember, and this is vector B. So vector A और vector B को add कर रहे हैं. There is the additions between पैरेलल शिफ्ट vector A and vector B. अगर ऐसा हो रहा है तो एडिशन करते वक्त जरा ध्यान रखिएगा एक बात. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द वेक्टर A and in addition the head of the first vector join with tail of the second vector. Please remember this point. This process is called addition. In addition, the head of the first vector join with the tail of the second vector. Please remember, please be careful. Head of the first vector add with the tail of the second vector. And the resultant of such vectors, the resultant of these additions is the direct distance between tail of the first vector to head of the second vector. This is the vector R, which is vector A plus vector B. My dear friends, yes, Pranesh, tell me. सर वो मैंने एक डाउट भेजा था, वो उसका आंसर नहीं भेजा आपने. आपने कौन सा डाउट भेजा था? सर एक क्वेश्चन भेजा था यू. So I want to again explain. Suppose there is two vector, vector A and vector B, and in addition, first of all draw the vector A, and in please remember this point. In addition, the head of the first vector join with the tail of the second vector. Please remember, head of the first vector join with the tail of the second vector. So in vector A, this is the head, this is the portion is head, and the head of the vector A join with the tail of the vector B without changing the direction of vector B. Please remember, without changing the direction of vector B. So if the vector B is along this direction, so please put such like that. And in addition, please remember the head of the first vector. The head of the first vector join with the tail of the second vector. Dear student, clear? Is it clear? So in addition, the head of the first vector join with the second of the tail of the second vector. This process is called addition. So what is the sum? What is the resultant? So resultant is that it is the direct distance between head of the first vector, tail of the first vector to head of the second vector. So this direct distance is represented as the sum of two vector, and this term is called resultant of sum of A two. plus B vector. Okay, sum of vectors. So my dear friends, please remember, in addition, the head of the first vector join with the tail of the second vectors, and the resultant of these vectors is the direct distance from head of the first vector to from tail of the first vector to head of the second vector. Clear, my dear friends?
Yes, Okay. sir. So this is the most important point actually. So please remember, बच्चों एडिशन में इस बात का ध्यान रखना प्लीज. I humble request to all of you and please remember to all the points. It is the most important point that in addition the head of the first vector join with the tail of the second vector and resultant is the direct distance between tail of the first vector to head of the second vector. Clear my dear friends? सर Is it वापस बोल सकते हैं क्या आप? is it clear? यस Yes, सर. sir. So in addition, the head of the first vector, the head of the first vector join with tail of the second vector and resultant of some of these vector is direct joining from tail of the first vector to head of the second vector. Okay, my dear. यस सर. Let us see first off. So before learning the summation of vectors, we learn a sum of two vectors only. So अभी हम जो देखने जा रहे हैं बहुत सारे वेक्टर्स को सम करने से बेटर ये है कि अभी सिर्फ हम दो वेक्टर्स का एडिशन देखेंगे. सो बच्चों फॉर summation of two vectors, देखो दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए दो मेथड्स हैं. एक है आपके पास देयर इज टू मेथड्स. वन इज द ट्रायंगुलर मेथड and other one is parallelogram method. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रायंगुलर मेथड एंड पैरेललोग्राम मेथड and how to use and when we use the triangular method and parallelogram method. These points are very important points and please remember in addition अगर बच्चों if आपको पहले मैं पढ़ा रहा हूं अगर वेक्टर ए ऐसे दिया गया हो और वेक्टर बी ऐसे हो मान लो एक के बाद दूसरा वेक्टर लग रहा हो if one vector add after another vector if one vector add after another vector then we use a addition of two vectors. How is it? Via triangular method. So one is like this. So first of all draw the vector A and then vector B and this method is called triangular method. एक बार फिर से सुन सर लो आप लोग प्लीज. क्या हो रहा है कि अगर एक वेक्टर के बाद दूसरा वेक्टर लगता है पहले वेक्टर के बाद दूसरा वेक्टर लगे और उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को निकालना हो मतलब ऐड करना हो तो ट्रायंगुलर मेथड का यूज करते हैं. कैसे? ड्रॉ द वेक्टर ए एंड द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन विद द tail of the second vector and the resultant is the direct distance from A to B. Yeah, tail of the first vector to head of the second vector. Clear my dear friends? यस सर. फॉर एग्जाम्पल एक इलस्ट्रेशन लेकर और अच्छे से फील करते हैं. अगर मान लीजिए आप का ये डायरेक्शन है ये आपकी ईस्ट है
ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। बच्चों, यू आर स्टैंडिंग इन हियर and first of all you travel along east direction with 3 meter. Okay, then taking turn and moving towards north at 4 meter and stop. Then what is your displacement? So displacement is what? Displacement is what? 5 meter. It is minimum distance between initial point to final point. This 5 meter. कैसे? अच्छा देखते हैं फर्स्ट वेक्टर क्या है। देखा जाए तो फर्स्ट वेक्टर जो है वो 3 मीटर ईस्ट है कि नहीं? फर्स्ट वेक्टर ए इज 3 मीटर ईस्ट and the second Yes, vector sir. b is what? This is 4 meter west, 4 meter north. sorry north, I'm sorry, it's north, 4 meter north. So आप देखिए यहां पर a फर्स्ट वेक्टर चलने के बाद ही सेकंड वेक्टर आया कि नहीं आया? Tell me, my dear friends, in this Yes, addition, sir. the first vector used after second, sorry, second vector used after first vector ना? Yes, sir. Tell me मेरे दोस्तों। Yes, sir. सो ऐसे एडिशन को कैसे करेंगे? वाया ट्रायंगुलर मेथड से। तो आप देखिए ट्रायंगुलर मेथड कैसे लगाएंगे आप? ट्रायंगुलर मेथड में ड्रॉ द वेक्टर ए ईस्ट डायरेक्शन, then vector b along this direction, this is 4 meter, and there is the addition, यहाँ addition हो गया, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिल गया, तो रिजल्टेंट किधर होता है बच्चों? रिजल्टेंट किधर होता है? direct distance between a tail of the first vector to head of the second vector. This is called the resultant. This is called resultant. Clear, my dear friends? और इसको Yes, अगर sir. आप स्केल से मेजर करोगे ना तो आप देखोगे ये आंसर 5 मीटर ही आएगा। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ इफ यू हैव अ प्रोटेक्टर पेन एंड स्केल्स देन प्लीज ड्रॉ 3 मीटर डिस्टेंस। आप क्या करो, लेट 1 meter is equal to 1 centimeter. Please draw 3 meter distance horizontally. Draw. First of all, draw 3 meter distance horizontally. Draw किया? किया बच्चों? Now you can draw the vertical 4 meter distance at angle 90 degree. Please. Proper 90 degree पर आप एक 4 मीटर 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ड्रॉ करो प्लीज। सर ट्रायंगल 90 डिग्री के अलावा दूसरे एंगल में रहा तो वहां से मेजर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वेक्टर ए मान लो 3 मीटर ईस्ट है, ओके बेटा, 3 मीटर ईस्ट ईस्ट, और वेक्टर बी जो है वो है सॉरी 4 मीटर, मान लो 4 मीटर एट एंगल 45 डिग्री, 45 में 60 डिग्री ले लेता, चलो 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ या फ्रॉम ईस्ट। चलो ये है। तो अब देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो अब एडिशन कर रहे हैं, ये हो गया वेक्टर ए ईस्ट की डायरेक्शन में, हुआ ना बेटा 3 मीटर? हाँ सर। Yes, sir. अब इससे 60 डिग्री पर एक और वेक्टर ड्रॉ करो, वेक्टर बी। ड्रॉ द वेक्टर बी 4 मीटर मैग्नीट्यूड एट एन एंगल 60 डिग्री। ड्रॉ करिए, आप प्रोटेक्टर का यूज करिए, इसके विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यू स्केल, प्लीज ड्रॉ द वेक्टर बी व्हिच इज मैग्नीट्यूड इज 4 मीटर एट एन एंगल 60 डिग्री। प्लीज रिमेंबर। Sir, Yeah, why you have taken that 60 degree at exterior angle? because it is taken like this from 60 east, so this is the east direction, this is the east. Okay. Na? So the, yeah, this is the most important question, and please remember the angles is always the positive angle, always measure, always measure
in clockwise, sorry, counterclockwise. That means anti-clockwise or counterclockwise. Is it okay? Clear? So first of all, Yes, sir. remember कि कभी भी कोई भी एंगल हो ना बच्चा, always the angle is always measured in counterclockwise direction, and this is positive. If you are taking a negative clockwise sense, then the angle is in negative. So 60 degree from east, so this direction is eastward direction. Am I right? And the clockwise sense is 60 degree, thus the angle is exterior angle. Clear? Yes, sir. Is that Yes. clear? Yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Tell me, my dear, what is the resulted? What is the resulted? 6 centimeter. Really? 6 centimeters. Everyone 6 centimeter? Yes, sir. Please write in comment box 6 centimeter, 6 centimeter. So बच्चों यहाँ से आपने देखा कि अगर कोई दो वेक्टर्स का एडिशन हम कर रहे हैं वाया ज्योमेट्रिकली, तो हमें क्या करना चाहिए? एक स्टैंडर्ड मान लेना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ, क्योंकि आप सोचो ना, आप अपने पेपर पे क्या 1 मीटर की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या? 3 मीटर की नहीं लाइन No, ड्रॉ sir. कर सकते हैं क्या? इज इट इज इट पॉसिबल? No, No, sir. sir. नो, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हम 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन वेरी इजिली ड्रॉ 1 सेंटीमीटर लाइन। बोलो भैया सर नो। Yes, sir. Yes, sir. sir. So first of all, for geometrical addition, geometrical addition, addition, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना? वी यूज प्रॉपर स्टैंडर्ड। प्रॉपर स्टैंडर्ड मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 इंच, ऐसे करके लिख सकते हैं ना, 1 इंच और Yes, 1 sir. सेंटीमीटर। So you can, such type of standard is very useful and you can very easily draw in your paper. ठीक है, on your paper. चलो बच्चों आगे देखते हैं। Let us see the next important. हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट एंगल पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ मेजर पे नहीं? हाँ, दोनों के बीच का एंगल क्या है इस बात पे डिपेंड करता है Yes, sir. है ना? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि द रिजल्टेंट ऑफ addition of two vector, addition of two vectors is the measurement value from B A to B. ओके, ए से बी के बीच की जो मेजरमेंट वैल्यू होगी वही कहलाएगी आपकी ए टू बी या फ्रॉम टू वेक्टर्स। ठीक है ना? सो ये क्या कहलाएगी? आपका रिजल्टेंट कहलाएगा। अच्छा बच्चों एक बात और सुनिए। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं कि ये रिजल्टेंट का एंगल कितना है अल्फा, तो इसको भी मेजर करके बताएंगे क्या? कैन यू मेजर दिस एंगल वाया प्रोटेक्टर? Yes, sir. Yes, sir. टेल मी माय डियर, टेल मी बच्चों, Yes, sir. आप लोग बोलो ईस्ट नॉर्थ के बीच का ये एंगल कितना आया अल्फा? और ये वाला Sir, भी एंगल 40. बताओ, ये एंगल भी बताओ। ये कितना आ रहा है बच्चों? 40 आ रहा है मेरा। 40, 40 आ रहा है। देखने से 40 लग रहा है क्या? मेजर क्या था सर? सर 35 आ रहा है सेकंड वाले का, और Yes, sir, 35. फर्स्ट वाले का एक ही आ रहा होगा अमृता, 55 आ रहा है। एक ही एंगल आ रहा होगा बच्चा, एक ही आ रहा होगा। अल्फा यहां से मेजर कर रहे होगे तो 35 ही आ रहा होगा। 35 मेजर करिए ना आप, उसको प्रोटेक्टर रख के मेजर करिए, देखिए क्या आता है एंगल। सभी लोग मेजर करके 55 कमेंट आ बॉक्स रहा है में सर। लिखो ना बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखो कितना आ रहा है। 54।
6 meter. So how to write this resultant vector in vector form? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द मैग्नीट्यूड, दिस इज 6 मीटर, और एंगल कितना है बच्चों, एंगल कितना है 35 डिग्री, तो इट्स अ 35 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर, बोलो। Yes. Yes, sir. sir. Okay, sir. Now let us see the algebraic method. algebraic देखो ना कितनी सारी दिक्कत हो रही है आप लोगों को, कोई 34 बता रहा है, कोई 35 बता रहा है। ऐसी मेथड्स को पढ़ने से क्या फायदा जिसमें इतना एरर हो, है ना। उससे बेटर तो सर ऐसा मेथड बताओ जिससे एक्यूरेट आंसर है। तो उस एक्यूरेसी आंसर्स के लिए मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, ट्रायंगल, अभी हम ट्रायंगुलर मेथड पढ़ रहे हैं, तो ट्रायंगुलर मेथड में ही हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड की। My dear friends, triangular method is used when two vectors use one after another. जब एक वेक्टर के बाद दूसरे वेक्टर का यूज किया जाता है तो ट्रायंगुलर मेथड का यूज करते हैं। प्लीज रिमेंबर, when two vectors are used one after another. So अगर बच्चों suppose this is a vector A and this is plus vector B, like this. So please remember, if the vector A makes an angle theta from horizontal and vector B is horizontally. So first of all, let us see in addition, draw the vector A like this and draw the vector B. Okay, my dear friends, this is vector A and this is vector B. Okay, this angle is almost theta because this is a horizontal degree. So as we know, for better clarification, I want to use a different illustration, because first of all, if we take the easy things, then this is very useful for you. So suppose this is vector A plus this is vector B, and this angle is theta from horizontal. So in addition, draw the first vector A and the head of the first vector join with the tail of the second vector. Please remember, बच्चों यही तो एडिशन होता है। एडिशन में करते क्या है, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन विद द सेकंड टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। टेल भी बच्चों आप लोग बात नहीं कर रहे हो मुझसे। Yes, sir. सो दिस Yes, इज द sir. एडिशन, दिस इज द एडिशन। बच्चों एडिशन में जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होता है, चलो बताओ रिजल्टेंट क्या होता है। A रिजल्टेंट क्या, vector plus B Vector A vector. plus vector B. हाँ, जिसमें क्या बोलते हैं, इट इज द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आर ए टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द सेकंड Second वेक्टर। vector. बच्चों इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ए, magnitude of vector b is b and magnitude of vector r is r. Suppose ऐसा दिया गया हो, ऐसा कैलकुलेट करके आप निकालते हो कि मैग्नीट्यूड a का जो है वो a है, मैग्नीट्यूड b का जो है वो b है और मैग्नीट्यूड r जो है वो r। ठीक है, सो इन दिस ट्रायंगल मैं नॉमेनक्लेचर कर रहा हूं कुछ, दिस इज पॉइंट o, दिस इज p, दिस इज q, OPQ। इस p को आगे जब मैंने बढ़ाया, ध्यान से देखो, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर ये पॉइंट M मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। Yes, sir. ये पॉइंट M मिल गया ना बच्चों। अब Yes, जरा sir. लेट अस सी द ट्रायंगल OQM। सी ट्रायंगल OQM, आपने देखा ना OQM ट्रायंगल। बच्चों OQM ट्रायंगल देख रहे हो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला ट्रायंगल। लेट अस सी दिस ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। Yes. Yes, sir. It's Yes, right sir. angle. This is the right angle triangle. So in right angle triangle, the square of hypotenuse, is equal to what? OM square Side one plus square plus So side OM two square square. OQ square is equal to OM square plus plus QM square. Am I right, Yes, sir. my dear? Yes, Yes, sir. sir. That means Yes, the sir. square of hypotenuse is equal to the sum of square of
base and square of perpendicular. Clear, my dear friends? Yes, sir. Acha. Let us see. The OM is this line is the sum of OP plus PM. Yes, sir. So OQ square is equal to the OM is OP plus PM the whole square plus QM whole square. Am I right or wrong? Yes, sir. Yes, Okay. sir. What is, can you open this whole square term? So this is Yes. very easy for you. This OQ square is OP square plus PM square plus 2OP or OPPM. कुछ भी कहो, मैं सोच रहा हूँ मुझे कंपोजर तो बन ही जाना चाहिए, एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ तो कमा ही लेंगे, है ना। इतना बढ़िया गाना बनाया है मैंने, देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर प्लस 2OP OPM। हंस तो दो मेरे भाइयों, सर यार अच्छे से हो जाएगा ये। मुस्कुराते रहिए। सर आखिर हमारा क्या आप होगा? आखिर आप हमसे जुड़ चुके हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चों? हेलो, यार अच्छे से हो जाएगा ये। हाँ आदित्य। Okay, now please see this triangle. Please see this triangle. This is also very useful for you. Okay. In this triangle, the triangle PQM. This is also right angle triangle, na my dear? Yes, sir. This is also right angle triangle, na? Yes, sir. Yes, sir. So if this is the right angle triangle, so tell me, my dear friends, sine theta is equal to what? OM, QM. Sine theta, tell me. In Opposite upon hypotenuse. triangle PQM, in triangle PQM or QPM, in triangle QPM, the sine theta is what? Tell me, my dear, sine theta is what? Opposite upon hypotenuse. QM QM. upon pi हाँ, p. ऐसे ऐसे बोलो ना, QM upon PQ, QM upon PQ, ऐसे बोलते हैं. So QM is the perpendicular. Sine theta is equal to what? It is the perpendicular upon hypotenuse. So QM upon P. Clear? And Yes, sir. आप देखिए, after further solve, the value of QM is what? PQ sin theta. PQ into sin theta. QM is PQ sin theta. So QM is PQ sin theta. फिर आपने cos. My dear friends, similarly, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों cos theta कितना होगा? What is the value of cos theta? Tell me, my dear. What is the value of Adjacent cos side by theta? opposite. So it's a PM by PQ. PM by PQ. Clear, my dear friends? So PM is the base upon hypotenuse. So this is the base upon hypotenuse. So what is the value of PM? PQ cos theta. PQ cos theta. Very good. Now let us see this expression. Please see this expression. In this expression, the OQ square is equal to OP square plus PM square plus 2OP into PM plus QM square. Am I right? Okay. Yes, As we sir. know, the value of QM is PQ sin theta and the value of PM is PQ sin theta, PQ cos theta. So please put the value of PM and QM in this equation. Okay. So the OQ square is equal to OP square
So let us see further. Is the OQ square is equal to OP square? My dear friends, let us see, this is PQ cos theta and this is PQ sin theta. So here common the PQ whole square. This term is cos square theta Sin square theta plus cos square plus theta. sin square theta plus 2 OP into PQ cos theta. सर My वो dear, 1 हो जाएगा. this term is equal to 1. So simple resultant is OQ square is equal to OP square plus PQ cos square plus 2OP PQ cos theta. cos theta. Clear my dear? Clear? सर अब रूट हो जाएगा ना. हाँ, एक 1 second. Let us see. Let us see. Here the OQ is R vector. OP is P vector, A vector, and OB is OQ is PQ is B vector. So the magnitude of vector is A, the magnitude of vector B is B, and the magnitude of vector R is R. So put value of OP, PQ, and OP and OQ in terms of A, B, and R. So here OQ is R square is equal to A square plus B square plus 2AB cos theta. Now the resultant is beta is a R is square equals to root root over A square plus B square plus 2AB cos theta. 2AB cos theta. This is the most important term. Please remember, very, very important formula. When two vectors add one after another, then we use the triangular method, and the triangular method is A square plus B square plus 2AB cos theta. My dear friends, now you want to calculate the resultant angle. So for resultant angle, let us see the triangle. First of all, let us see in triangle. I want to redraw the situation. Okay, this is the vector A, this plus vector B, and vector B makes an angle theta from horizontal. So this is the addition. This is vector A plus vector B. It is, this process is called addition because here head of the first vector meet with the tail of the second vector. So this is the addition, and the resultant of this vector is the direct distance from A to B. Yeah, from tail of the first vector to head of the second vector. This vector A produces like this, and draw the perpendicular around this point. So this point is called O, this P, this M, this Q. So in triangle, this angle is made by the resultant angle is called alpha. So my dear friends, in triangle OQM, in triangle OQM, in triangle OQM, my dear friends, tan alpha is equal to what? In triangle OQM, tan alpha is what? Tell me, my dear friends. QM by OM. QM upon OM. QM upon OM. QM upon OM. That is perpendicular piece. So it is QM upon OM. My dear friends, QM is what? QM is what? It is the B sum vector. of OP. Sorry, OM. OM is what? It is the sum of OP plus PM. Okay. So QM upon OP plus PM. My dear friends, let us see the QM is what? It is B sin theta if this angle is theta. Yes sir. Yes or no? So Yes, sir. QM is B sin theta, and divided by OP is A. OP Yes, is sir. A, or PM is PM is B cos theta. B cos theta. ये कहां से देखा हम लोगों ने? सो ये हम लोगों ने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बिल्कुल यहाँ पर, कि QM is PQ cos theta and PM is PQ cos theta.
तो ये दोनों टर्म्स हमने देख रखे हैं और पी क्यू जो है वो बी के बराबर है, तो यहां से आ जाता है हमारे पास OM इज QM is B sin theta and PM is B cos theta. My dear friends, so tan alpha is equal to कितना हो गया? B B sin sin theta theta upon A upon plus A B cos plus theta. B cos theta. My dear friends, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? Tan inverse of tan B sin inverse theta upon A plus B cos theta. B sin theta upon A plus B cos theta. क्लियर बच्चों? Yes, क्लियर? sir. Yes, सो sir. नाउ आपने यहाँ पर रिजल्टेंट एंगल भी निकाला और उसके साथ साथ आपने क्या निकाला? दूसरी चीज एक और निकाली, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। जो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया था शुरुआत में, हमने क्या किया था? एक वेक्टर ए लिया था, एग्जाम्पल देखते हैं। वेक्टर ए बच्चों लिया था 3 मीटर ईस्ट, वेक्टर बी लिया था 4 मीटर एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। ओके, चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए जरा, यहां पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो रिजल्टेंट डायरेक्टली कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, दैट मींस 9, है ना बच्चों? फॉर्मूला हमने यही पढ़ा हुआ है ना, Yes, 3 sir. स्क्वायर तो 3 स्क्वायर प्लस 4 5 स्क्वायर आएगा sir. प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 60. My dear friends, r is equal to square root of 9 plus 16 plus 2 into 12 into cos 60 is 1 by 2. 2 से 2 cancel out हो गया मेरे दोस्तों। Root 37. r is equal to square root of 37, which is approximate 6 point something ना, which is approximate 6 Yes, point sir. something, 6.21 या 6.1 मीटर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो आपका आंसर भी इसी के आसपास आ रहा था। आपको याद होगा कि आपने जब मैग्नीट्यूड को मेजर किया था तो 6 के आसपास आ रहा था, बट दिस इज द एक्यूरेट आंसर। क्लियर? क्लियर Yes, बच्चों? Yes, sir. बोलो कोई दिक्कत किसी चीज की? No, sir. एक्चुअली ये भी वैल्यू एग्जैक्टली आएगी 0.6.083, सो विच इज 6.1 मीटर। तो 6.1 मीटर को एरर 0.01 मीटर की एरर हो सकती है, 0.01 सेंटीमीटर की, है ना? अच्छा अब एंगल देखते हैं। एंगल के लिए हमने क्या फॉर्मूला निकाला था? अल्फा इज इक्वल टू tan Tan इनवर्स inverse b, of B sin theta. 4 sin 60 डिवाइडेड बाय a3 A प्लस B 4 cos theta. cos 60। बच्चों sin 60 डिग्री कितना होता है? Root 3 by 2. रूट 3 by 2। तो tan इनवर्स 4 square root of 3 by 2 divided by 3 plus 4 into cos 60 is 1 by 2। My dear by 2. friends, ये कितना आ जाएगा? 2 root 3. tan inverse Root 3. alpha is equal to tan inverse 2 root 3 Root 3 divided by I 5। इसको 5. सॉल्व करते ही अब जो अल्फा निकालोगे, वो ऑलमोस्ट आएगा आपके पास 2 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 0.693 और tan इनवर्स 0.693 की वैल्यू 34.72। सो अगर ये भी 35 डिग्री अगर आप लेते हो तो इट्स वेरी गुड फॉर यू। यस 35 degree ना? हाँ, हमें ये सिंपलीफाई करके से पॉइंट में आंसर, फाइनल आंसर लिखने या फिर ऐसे नहीं छोड़ सकते अपॉन में? आप यहां तक लिख के छोड़ दीजिएगा। अगर आपको ये वैल्यू दी गई हो तो ही आप कैलकुलेट करिएगा, अदरवाइज रहने दीजिए। ये भी आंसर Okay. सही है और ये भी आंसर सही है। क्लियर समझे ना बच्चों? तो आपने देखा ना कि मेजरमेंट से जो वैल्यूज आ रही थी, हमारी मैथमेटिकल वैल्यूज भी वही मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही बच्चों? इसका Yes, sir. मतलब मैंने जो भी आपको सिखाया है वो बिल्कुल सही सिखाया है। चलिए Verified. एक काम करते हैं, एक काम और करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। और इस बार आप बताओ, अगर वेक्टर इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 3 मीटर
3 meter at an angle 30 degree from east या from horizontal. Okay, and vector B is 4 meter at an angle 120 degree from horizontal. Then find the resultant of vector A plus vector B. Then find the R vector equal to A vector A plus vector B. Tell me, my dear friends, आप लोग solve कर रहे हो? So please give the answers. Let us see in this question, the vector A magnitude is 3 meter and angle 30 degree from horizontal. So my dear friends, vector A is like this. This is the vector A and makes an angle 30 degree from horizontal. Plus, now the vector B is 4 meter at an angle 120 degree. My dear, 4 meter at an angle 120 degree. So this is 4 meter. This is the horizontal line. 4 meter line is here. This is 4 meter at an angle 120 degree. Now this vector A and this is vector B. Now vector A and vector B add. So if the vector A and vector B add करने जा रहे हैं, so first draw the first vector. This is the vector A, and this angle is 30 degree, horizontal 30 degree. Okay, and this is the vector B. This is the vector B. The vector, this process is called addition. First of all, the head vector A, the head of the first vector add with the tail of the second vector. So this is the B, and this angle is what? This angle is what, my dear? This angle is what? 120. 120. So 120 degree. my dear friends, please proceed this vector A, and this angle is 30 degree. So what is the angle between A vector and B vector? Tell me, my dear friends. Vector A and vector B के बीच का एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री सर. अरे अगर ये टोटल 120 है तो 120, अरे 90 degree. listen. If the angle made by the vector B from horizontal is 120 degree, and this vector A, if we proceed the vector A, then the vector A makes an angle 30 degree from horizontal. 90 degree. Then what is the angle between vector A and vector B? 60 डिग्री सर. 90 degree. Huh? 90 degree. 90 degree. 90 degree. So this angle is 90 degree. So theta is the 90 degree. So my dear friends, यहाँ पर जो थीटा यूज होता है ना, वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. बस यही मिस्टेक कर रहे हो आप यही मिस्टेक कर रहे हो. आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं फाइंड आउट कर पा रहे वेक्टर्स. अब आपका काम हो गया. अब आप सॉल्व करके देखो. आपसे होता है कि नहीं होता. प्लीज रीसॉल्व अगेन, प्लीज. सो फोकस किस बात पे करोगे आप? एंगल पे करोगे. पहला फोकस एंगल पे करोगे और दूसरा मैग्नीट्यूड में वैल्यूज डालोगे, रिजल्ट आ जाएगा. आप एंगल बता दो. नॉट 5.6 दीपक नहीं आएगा, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया है आपने. एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका. एंगल बताओ बच्चों, एंगल. तो एंगल tan अल्फा इज इक्वल टू B sin थीटा upon A plus B cos theta. My dear friend, B is 4, sin 90 is 1, divided by A is 3, 4 प्लस सर 4 ही रहेगा, 1 आएगा. plus 4 0, 4 into 0. तो this is 4 by 3. tan अल्फा 4 by 3 बच्चों कब होता है? जब अल्फा क्या होता है? 53 डिग्री होता है. अच्छा सर ये तो पता नहीं है सर. हाँ, ये मैथमेटिकल टूल्स में बताया जा चुका है. When the alpha is 53 degree,
देन tan अल्फा इज 4/3। मैं आपको एक लिंक सेंड करता हूं, उस लिंक में प्लीज आप प्ले लिस्ट में जाकर मैथमेटिकल टूल्स को अच्छे से देखो, ठीक है? ओके सर। ओके, तो जिन भी बच्चों ओके को सर। प्रॉब्लम होगा वो सब कुछ समझ जाएंगे, सारी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सिखाई गई है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन ये जो एंगल मिला ना, ये जो एंगल मिला, ये एंगल मिला आपको कहां से? अब जरा देखना, ये एंगल मिला वेक्टर ए से, यहां से, समझिएगा। और तो यहां हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल हो जाएगा बच्चों, बताओ? हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा? 53 + 30, यही तो होगा। अरे बोलो, बोलो बोलो, ये एंगल कितना होगा? ये वाला। ये टोटल एंगल यहां से यहां तक का कितना है? अल्फा। क्लियर? और ये एंगल 30, तो टोटल एंगल कितना हो गया? अल्फा + 30 हो गया कि नहीं हो गया? 83 और डिग्री। अल्फा आ गया तो एंगल कितना आ गया? सो आर वेक्टर इज 5 मीटर at an angle 83 degree from horizontal, clear my dear friends? यस सर। So now आपने देखा, अगर दो वेक्टर्स एक के बाद एक लगते हैं, if two vectors use one after another, then we use triangular method. How to use the triangular method? It is very easy in terms of geometrical or algebraic. The simple formula is that the magnitude of first vector, square of first vector magnitude plus square of second vector magnitude plus 2 times magnitude of a first vector into magnitude of second vector into cosine angle between vector a and vector b. Clear my dear friends? Clear? Hello? यस सर। So this is a very important formula, and here the theta is the, again मैं repeat कर रहा हूं, it is the angle between vector a and vector b. Clear my dear friends? यस सर। Okay, now let us see if two vectors use simultaneously. Suppose, let us assume if two vectors use simultaneously, like I want to elaborate some practical illustration. Suppose this is the box, and one person is pulling along this direction, and other person pulling along this direction with the force F1 and F2 respectively. So here two forces act simultaneously. दोनों forces simultaneously एक साथ लग रहे हैं ना बच्चों, है ना? यस सर। ऐसे में जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, इसको हम ट्रायंगुलर मेथड से नहीं लगा सकते. Why we are not using triangular method? Because in a triangular method, when one first vector add with a second vector, जब पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ जुड़े या पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर के बाद में आए, if one vector after another vector, clear? तब हम ट्रायंगुलर मेथड का यूज करते हैं. बट इन if two vector act simultaneously, like suppose like this block is pulling by two forces and both forces are act simultaneously, then we don't use the triangular method, we use the parallelogram method. Okay my dear, suppose let us see another examples. Suppose let us assume this is the block and the block is suspended by mass m. So one string is pulling like this, other one suppose करो एक force इधर लगा दिया, this is F1, और एक force इधर लगा दिया, this is F2. So there is three forces acts simultaneously. So here also three forces act simultaneously. So we don't use the triangular method. So if two or more than two vectors use simultaneously, अगर दो या दो से अधिक वेक्टर्स, ज्यादा वेक्टर्स एक साथ लग रहे हो किसी भी पॉइंट पर, तो हमें पैरेललोग्राम मेथड का यूज करना चाहिए. प्लीज, तो क्या होता है पैरेललोग्राम मेथड? जरा ध्यान से सुनिएगा. लॉ ऑफ
parallelogram. My dear friends, first of all, listen very carefully. If two vector shows the adjacent side of a parallelogram, if two vector shows the adjacent side of a parallelogram, then its resultant is represent the longest diagonal of the parallelogram. मैंने क्या बोला, अगर दो वेक्टर्स एक एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है बच्चों वो उस पैरेललोग्राम के लॉन्गेस्ट डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा. लेट अस सी द बेसिक क्लैरिफिकेशन एंड फॉर better clarification I want to draw this situation. If two vectors shows a adjacent side of a parallelogram, so suppose this is vector A and this is vector B, and both vectors are x simultaneously, and the angle between two vectors are vector angle theta. So here these vectors shows the adjacent side. Adjacent size means they are meet at a particular point, they coincide at a particular point, single point. So such type of sides vectors are represent the adjacent vectors. Suppose if you draw the parallel vector A, अगर A के पैरेलल कोई वेक्टर ड्रॉ करें तो वो ऐसे ही ड्रॉ होगा बच्चों की नहीं होगा, बोलो. हाँ. Yes, और sir. वेक्टर बी के पैरेलल अगर कोई वेक्टर ड्रॉ करे तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना. Yes, sir. मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b लिख रहा हूं, so what is the main fundamental motive of addition? The main fundamental motive of addition is the always the head of the first vector join with the tail of the second vector. of the बोलो भाई second ऐसा नो. vector. So here this is the addition. बोलो भाई बच्चों ये एडिशन हुआ कि नहीं Yes, हुआ? sir. तो वेक्टर हुआ. बी जो ये पिंक कलर से वेक्टर बी बना हुआ है ये येलो कलर के वेक्टर बी के पैरेलल है कि नहीं? Yes, So we sir. can say that this vector b as parallel vector or equal vectors. So इसलिए अब जरा ध्यान से देखो तो ये पैरेललोग्राम बना हुआ दिख रहा है ना बच्चों आपको? Yes, sir. अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? अगर मैं इस वाले वेक्टर को रफ कर दूं और इस वाले वेक्टर को रफ कर दूं तो ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b का रिजल्टेंट यही होगा कि नहीं होगा जो आपके सामने लिखा हुआ है? माय डियर, यस और नो? यस सर. तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर दो वेक्टर एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है बच्चों, उनका जो रिजल्टेंट है वो जो उसका सबसे बड़ा डायगोनल होगा, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Yes, sir. टेल मी. सो कैसे लिखेंगे? Yes, sir. if two vector shows adjacent side of a parallelogram, या बिल्कुल सही बात बोली है दीपक want to ask that means both the triangles has common resultant. Yes, of course my dear, this is also the addition. अच्छा एक बात मेरे को तुम खुद बताओ, let us think, if you want to add 2 plus 3 then what is the resultant? 5. And if you want to 3 plus 2 then what is the resultant? 5. So it doesn't matter. It does not matter if you want to add vector a plus vector b or vector a b plus vector a. The resultant is same. Am I right or wrong? Right, sir. Okay. So either this is also an addition because here the vector b, the tail of the first vector, the tail of the head of the first vector add with the tail of the second vector. So it is vector b plus vector a. Clear, my dear friend? Yes, sir. So if two vectors show the adjacent side of a parallelogram, then its resultant
represent longest diagonal of parallelogram. Yeah. Okay, my dear friend. So, my dear, एक बार पेन कॉपी और उठा लो, मतलब प्लीज यूज पेन, प्रोडक्टर एंड नोटबुक, ऑल्सो पेंसिल एंड ड्रॉ. आपको ये देखना है, इफ वेक्टर ए along 3 meter and vector b along 4 meter, okay, then this is the parallelogram and the resultant of these vector are diagonal of this parallelogram. Measure this diagonal, please. Measure this diagonal. Again, it is what? 5. 5 मीटर. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 5 मीटर. सो आपने देखा 3 और 4 अगर दोनों ही परपेंडिकुलर, देखो दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर, बोथ वेक्टर्स आर लाइज अलोंग सेम पॉइंट, है ना, एंड बोथ वेक्टर shows the adjacent side of a parallelogram, then its resultant is represent a 5 मीटर. और उसको मेजर करने पर, अगर आपने स्केल से मेजर किया है, सो मेजर करने पर जो लेंथ आ रही होगी वो 5 मीटर ही आ रही होगी. कंडीशन ये लगा देना 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. बोलो माय डियर. हेलो. यस सर. यस सर. है ना, अच्छी बात, अच्छी बात. चलो अब इसको एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना. और अच्छा, तो माय डियर देखिए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्सेस के लिए स्पेशली यूज किया जाता है. सो एल्जेब्रिक मेथड देखते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का. एल्जेब्रिक मेथड, आपने मैथमेटिकली एक चीज देख ली, उसका आपने सिग्निफिकेंस देख लिया कि अगर दो वेक्टर एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हो, साइमल्टेनियसली लाई कर रहे हो, तो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड का ही यूज करते हैं. ओके, अगर वेक्टर एक के बाद दूसरा, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा अप्लाई होगा तो ट्रायंगुलर मेथड का यूज होंगे. ट्रायंगुलर मेथड में भी हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स चेक करते हैं, और पैरेललोग्राम में भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ही देना होता है. फर्क ये है, पैरेललोग्राम मेथड का यूज तब किया जाता है जब बोथ वेक्टर्स साइमल्टेनियसली एक्ट. ठीक है ना. तो लेट अस सी, अगर बच्चों हमने ये बात करी कि अगर दो वेक्टर्स adjacent side of a parallelogram को represent करते हैं, suppose this is the vector A and this is the vector B, and this angle between vector A and vector B is theta angle. If two vectors shows the adjacent side of a parallelogram, then its resultant is indicates the diagonal of this parallelogram. So my dear friends, first of all draw the parallel vector of vector A and also draw the parallel vector of vector B. जैसे ही आप ए और बी के पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करते हो, आपको दिख जाता है कि माय डियर कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट डायगोनल मिल गया, विच इज वेक्टर आर. अगेन सिमिलर थिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज बी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज आर. माय डियर, आपको करना है कि प्लीज बी प्रोसीड द वेक्टर ए and draw the perpendicular on vector B and joining the tail of head of this vector B. So this nomenclature, this is O, P, M, Q. Again, my dear friends, this angle is theta. If this angle is theta, so we can say that this angle is also theta, because overall this is the vector A. So again, let us see the triangle OQM. In triangle OQM, my dear, in triangle OQM, tell me its OM square
plus QM square is equal to OQ square according to Pythagoras theorem. OQ square is equal to OM square plus QM square. Am I right or wrong? Tell me, my dear. Okay. Let us see one more thing. One more thing is that the OM is the sum of OP plus PM. Tell me, my dear. The OM is the sum of OP plus PM. So OM को आप ऐसे लिख सकते हो, this is the OQ square is equal to OP plus PM whole square plus QM whole square. Please open this whole square, please. OQ whole square is equal to, tell me. OP square plus PM square plus 2 OPPM. Very good. OP square plus PM square plus 2 OP into PM plus QM whole square. My dear, let us see one by one things. This is the wonderful equations, and let us see the triangle PQM. Please see the triangle PQM. In this triangle, the sine theta is what? In triangle PQM, the sine theta is what? QM upon QP. QM upon PQ. Very good. And cos theta is what? What is the value of cos theta? It's PM upon PQ. PQ. Very good. PM is the base ना, my dear. This is a right angle triangle, और right angle triangle में cos theta जो होता है वो base upon hypotenuse होता है, और sin theta जो होता है वो क्या होता है? Perpendicular upon hypotenuse होता है. Clear? Tell me. Yes, sir. So my dear friends, Yes, sir. here the QM is what? QM is what? PQ sin theta. Clear? QM is what? PQ sin theta. And PQ is PM is what? What is the value of PM is? PQ cos theta. Clear, my dear? Yes, sir. सो बच्चों, यहां पर आपने एक चीज देखी ना कि ओपी को, ओपी वेक्टर एक्चुअली क्या है? ए वेक्टर है. ओपी वेक्टर ए वेक्टर तो ए हो गया है ना. ओपी इज इक्वल टू ए, ओ क्यू इज इक्वल टू, ओ क्यू इज इक्वल टू, ओ क्यू इज इक्वल टू बी है ना. ओ क्यू इज इक्वल टू, सॉरी पी क्यू, आई एम सॉरी, इट्स पी क्यू. पी क्यू इज बी एंड ओ क्यू इज आर. तो बच्चों यहाँ पर पीओपी, ओपी, पीक्यू इन सब की वैल्यू लिख लेते हैं. सो उससे पहले आप पीएम और क्यूएम की वैल्यू और लिख लो. आप निकाल चुके हो पीएम इज पीक्यू साइन थीटा और पी और क्यूएम इज पीक्यू कॉस थीटा. तो यहाँ पर ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पीक्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ओपी into PQ cos theta plus QM is PQ square sin square theta. My dear friends, as we know, this is the in PQ square cos square theta plus PQ square sin square theta is equal to what? OQ square equal to OP square plus PQ square cos square theta plus sin square theta plus 2 OP PQ cos theta. My dear, this is equal to 1. So it is OQ square is equal to OP square plus PQ square plus 2 OP PQ cos theta. My dear friends, let us see. OQ is R square is equal to A square plus B square plus 2AB cos theta. My dear friends, R is equal to square root of A square plus B square plus 2AB cos theta. बच्चों,
आप देख रहे होगे रिजल्टेंट जो का फॉर्मूला यूज हो रहा है वही ट्रायंगुलर मेथड में यूज हुआ और वही हमने कहा यूज किया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड में भी वही सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है कि नहीं यूज हो रहा है बच्चों। यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। अच्छा, और इसके Yes, साथ sir. साथ क्या पूछा जा सकता है, इसके साथ साथ पूछा जा सकता है tan अल्फा, ये एंगल बताओ क्या होगा, अल्फा एंगल। सो माय डियर फ्रेंड्स फिर से हम सॉल्व करेंगे उसी ट्रायंगल को, लेकिन अब देखते हैं। तो फॉर resultant angle, let us see, for better clarification I want to redraw this situation. So this is the vector A, this is vector A, and this is vector B, and the angle between vector A and vector B is theta. And bachcho, this is the parallel vector, this is again parallel vector, and the resultant vector is like this, R vector. And this angle is made by this vector is called resultant angle. This angle is called resultant angle. So resultant angle is the angle made by the resultant vector from A, from first vector. Maybe the question is also asked this angle beta. So this beta angle is also the resultant angle, but this angle is made by vector B. So my dear friends, alpha is the angle made by resultant vector from A vector, and beta is the angle made by Resultant from B vector. resultant vector from B Vector B. vector. ओके, सो बच्चा दोनों में से कोई भी एक चीज पूछी जा सकती है। सो आप इसको आगे बढ़ा दो, ये एंगल ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये सबको तो हमें पता है, ओ पी पी एम पी क्यू, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। सो बच्चों इन ट्रायंगल ओ क्यू एम, in triangle OQM, in triangle OQM, my dear friends, OQM triangle आप देखिए और बोलिए tan alpha is equal to कितना होगा, what is the value of tan alpha? Tan alpha is equal to QM upon OM, perpendicular upon base. It's a QM upon OM. Clear my dear friends? It's QM upon OM, and OM is OP plus Plus PM. So OM is OP plus PM. So it is a QM upon OP plus PM. My dear friends, as we know कि QM is equal to कितना होता है, QM is equal to PQ sin theta. अभी हमने देखा हुआ है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी इसकी जस्ट, कि QM is equal to हमारे पास आया था PQ sin थीटा, लिखा हुआ दिख रहा है ना, और PM is equal to PQ cos थीटा. So my dear friends, QM को भी देख सकते हैं, PQ को भी देख सकते हैं यहाँ पर. So दोनों की वैल्यू हम उठा के रख देते हैं यहाँ पर, QM की भी और PM की भी. तो PQ sin थीटा अपॉन OP is OP plus PQ cos theta. As we know, PQ is B and OP is A. So this is tan alpha is equal to B sin theta अपॉन A प्लस B cos थीटा. मेरे दोस्तों यहां से आप बड़ी आसानी से अल्फा बता सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, तो इट्स विल बी द tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Yes, sir. And this is the angle made by resultant vector from A. ठीक है ना, और बीटा कितना हो जाएगा बच्चों, तो बीटा हो जाएगा tan इनवर्स, उल्टा हो जाएगा बस, A sin थीटा अपॉन
बी प्लस ए कॉस थीटा, A cos theta. याद रखिएगा। तो अगर सेकंड वेक्टर से पूछा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा बी वेक्टर से, अगर ए वेक्टर से पूछा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. ओके 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 ओके। अच्छा जल्दी से एक एग्जांपल बता दो, एक छोटा सा एग्जांपल पूछ रहा हूं। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू सपोज 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना, एंड वेक्टर बी इज 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, then vector A plus vector B is what? Tell me, what is the answer of this question? So let us see, my dear friends, both are easy question. This is very easy because vector A is in here, this is north, it is 3 meter, 5 meter, 5 meter, and vector B is east, vector B is 3 meter east. Both vectors shows a angle between both vector theta is 90 degree. So resultant is what? It is square root of a square, which is 25. B square is 9 plus 2 into 5 into 3 into cos 90. So my dear, cos 90 आपने हेड और is टेल कनेक्ट नहीं किया। हेड और टेल का जरूरत नहीं था यहाँ पर, क्योंकि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, एक ही पॉइंट पे लाई कर गए, तो हमने डायरेक्टली लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा दिया ना। हमने यही तो पढ़ा है, दो वेक्टर अगर एक ही पॉइंट पे लाई करे साइमल्टेनियसली तो हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा सकते हैं। तो वेक्टर आर बराबर कितना आ गया बच्चों, 25 इंटू 9 इज 34। तो जिन बच्चों का आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 34 है वो जस्ट रेज योर हैंड प्लीज। बहुत बढ़िया, and thank you so much for joining this class. Thank you.